Assalamu alaikum, good morning, Ramadan Mubarak to every single Muslim all around the world. तो मेरे ज़हन में ख्याल है कि जब का रमज़ान स्टार्ट हुआ मैंने उससे उससे उस वक्त से लेके अभी तक I haven't done any live chat, so I thought that I would do a live chat session to address the questions that I've been receiving in my DMs lately. So let's roll. Ramesh, huge fan of yours. Thank you, brother. I appreciate that. Appreciate it. I'm actually I'm very happy and I feel very rewarded to see these kind of comments in my live chat and my comments, YouTube videos. You know, the most valuable currency that you can hold today is how you influence people. It's not about how much money you make or if you drive a nice car, if you have a nice house. Everybody's going to have a house, or everybody's going to live in a house at least. If I'm talking about the general population, everybody's going to have a car, but they're going to die. Does that add like true meaning to your life? It's about how you influence people. That is the most valuable thing that you can do. And I honestly, I can make a lot of money, but the way I influence people on my social media, Instagram, YouTube, I feel rewarded and I feel very accomplished in return. Ramadan Mubarak, Khair Mubarak. Then we have Preetham. Hi sir, got you after so long. I hope you and your family are doing good. Happy Ramadan. Thank you, Preetham. Thank you so much for the Ramadan wishes. Khair Mubarak. My family's doing very good. Things have been going a little tight in Toronto because of the coronavirus, but hopefully things will ameliorate for Toronto soon. Oi hoi, vadde dole shole, GMD Nias Khan. Right now, I'm the lowest that I've been in the last 2 years. Usually my weight used to be around in the low 90s, but as of this morning, my weight today was 81.9 kilograms, which is pretty low. I mean, I haven't been this low in a long time. So it's surprising. Oh, mashallah, happy Ramadan Mubarak. Thank you, Muhammad Bhaijan. Kaise hain aap? Walaikum assalam, Bhaijan. Kaise hain Rohit Bhaijan? There's so many people, so much love. I really like it. Ramadan Mubarak. This is my boy, Sean. I love you, brother. Khair Mubarak, brother. You guys, can you guys hear my voice? There's this guy saying that you can't hear my voice. No voice. Can you guys hear me? If you can, then can you drop maybe a thumbs up or just let me know in the comments? भाई अभी अभी आपको याद किया और आप लाइव आ गए. देख लें साहिर भाई, उम्र लंबी है फिर मेरी कि नहीं. लोग सोच रहे होंगे पता नहीं उसामा भाईजान क्या पीते रहते हैं यार, ये क्या बंदा इस तरह की शेप में आने के लिए क्या करते हैं. ये देखें, इसके अंदर अगर आपको नजर आ जाए ना, पता चल जाएगा आपको, ये सादा पानी है. I'm not a big fan of supplements and I've never ever been a big fan of any kind of drugs or steroids, क्योंकि honestly मैं समझता हूँ कि being a Muslim, this is my belief, क्योंकि obviously बात है कि we believe in our last Prophet Muhammad, peace be upon him, and you know, उनके बारे में हम कोई disrespectful कोई बात उनके बारे में हम बर्दाश्त नहीं करते. लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि you know, I would have a lot of hatred towards anyone who tries to disrespect my religion and my prophet. लेकिन उसके बाद जो दूसरा मुझे गुस्सा उस बंदे पे आता है जो फिटनेस के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर पाँव रख के लोगों से झूठ बोलता है कि वो ड्रग्स स्टेरॉइड देता है और एंड पे वो लोगों के साथ ना गलत बयानी करे और लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दे कि नेचुरली आप ये अचीव कर सकते हैं. That is all bullshit. Voice is clear. Thank you, Ramesh. Thank you. Gotta go, brother. Workout time. Save the life, please. GMD ने आज आपका, मैं उम्मीद करता हूँ आपका वर्कआउट बहुत फर्स्ट क्लास हो. आज बड़ी देर बाद मेरा आर्म वर्कआउट था तो वो अच्छा गुजरा है. उम्मीद है आपका भी अच्छा गुजरेगा. Enjoy your workout. Nowadays my training going really good. Right now my bench PR is 143 kilograms and my squat PR is 187. And I can't do deads because of my lower back injury. I hear you, Preetham, but those numbers are freakishly impressive. Not gonna lie, I think the heaviest that I've benched in my life, as you guys have seen me on my social media, I don't think I've benched more than 3 plates, and that 143 is, I think that's 3 plates for me right there. So you're doing my PR, bro. That's impressive, insanely impressive, knowing how difficult it is to get to that number. Let's see. But I hope your back gets well soon, man. I mean, that's a really big bump in your way to, you know, getting up to those numbers. What's good, brother? Let's link up after the COVID shit's over. Yeah, Dilpreet Bhaijan,
I've been asking you for the longest time, and I know you have been after me trying to get up to meet, but things haven't been working out because of the pandemic. But as soon as the pandemic situation gets better for all of us, we're gonna meet, no problem. Inshallah. GMD Niaz Khan, आप ना वर्कआउट कीजिएगा. आपका तो आर्म वर्कआउट नजर भी आ रहा है, ये देख लें आर्म वर्कआउट. अच्छा, here's the trick point. So, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने सीखी है ना, वो ये है कि whenever you're, अब आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि I used to be 96 kilograms back in October, November, ये जो लास्ट ईयर अभी गुजरा है, I used to be that heavy. So, after losing so much weight, I'm 82 kilograms as of this morning, 81.9. तो आप अंदाज़ा करें 14 किलोग्राम लूज करने के बाद 14 kilograms, not 14 pounds. It's 14 kilograms. That's roughly 30 pounds that you lose. वो lose करने के बाद I seem to look bigger on camera. I look to seem bigger aesthetically. And why is that? इसका एक छोटा सा secret ये है. Secret इसका कोई है नहीं, एक illusion ही होता है. The leaner you are, the bigger you're gonna look. My arms, they were getting close to 18.75, 19 inches, but with a lot of fat on them. But right now, I don't have any fat, and right now my arms are they're a quarter inch smaller than what they used to be, but they look bigger. They look bigger than what they were before. So this is the reality, that if you're gonna get leaner, you're gonna look bigger. But being leaner, looking bigger, I mean, it all sounds fame and glory for everyone. Why doesn't everyone do this? Because everyone doesn't like being lean, is because it has a lot of drawbacks. You can't eat anything you want. You don't have the freedom to go out with your family and eat whenever they're dining in outside at restaurants. And you feel like, I mean, you don't feel like shit, but it's, for the most part, you feel very low on energy. I've had days जहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अपना weight का chart. In the last 1 month, there were so many fluctuations, ऊपर नीचे. And that was because I was going through my diet and I was cheating on a few days. So कुछ दिन, because I'm going through my exam season, so it's hard to focus on my exam if I'm feeling hungry. तो मैं जाके थोड़ा सा कुछ खा लेता था. इतना सा भी खाने से my weight used to go up and it wouldn't come down. तो उसको ऊपर नीचे लाते हुए, जगल करते हुए, बड़ा ये ना एक टायरिंग सी जॉब हो जाती है. So that's the thing. जी असमार भाईजान, so he's my friend from high school, असमार चौधरी. उम्मीद है यार यहाँ आप जल्दी आओगे इंशाल्लाह. He's coming to Canada, so let's see कि उनका सफ़र खैरियत से यहाँ तक पूरा हो जाए. By doing your fat loss program right now. ये है परमपाल रंधावा. भाईजान, I hope that you're following it to, you're following it to the word that I've explained on my YouTube. You're following it exactly word to word. तो आपको मैं बता रहा हूँ कि nobody can stop you from getting the results. It's that simple. फिटनेस को ओवर कॉम्प्लिकेट कभी भी नहीं करना चाहिए. मैं आपको एक छोटी सी बात यहाँ पे बताता हूँ, ये कोई भी नहीं बताता, ना जिक्र करना चाहता है. The best advice that I can give to any one of you watching this live chat video, अगर आपको वैसे ही एक जनरल फिटनेस का शौक है, वो ये है कि whenever you set on the journey to make yourself better in terms of your fitness, let it be if you want to lose weight, if you want to gain muscle, if you want to gain strength, ठीक है, आपको थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए होती है कि आप कहते हैं कि अच्छा कुछ सीखने को मिलता है ना, कि अच्छा अब चेस्ट मैंने करने जाना है, if I want to do back or if I want to do legs, I want to know कि एक्सरसाइज कौन सी बेहतर है. ठीक है, फॉलो अ वर्कआउट प्लान. लेकिन लोग आपको, क्योंकि जो बंदा इनएक्सपीरियंस्ड होता है ना, दे डोंट नो एनीथिंग, वो समझते हैं कि अच्छा इस वर्कआउट के अंदर एक एक्सरसाइज निकालने से कोई इतना बड़ा ड्रास्टिक सा इफेक्ट आ जाता है. और यही वो चीज़ जो आपको मैं ये बता रहा हूँ ना, यही यूट्यूबर्स, कंटेंट क्रिएटर्स कैश करते हैं. व्हाई? इट्स वेरी सिंपल. फिटनेस के अंदर मैं आपको पहले अपनी एग्जांपल बीच में रोक के बताता हूँ. आई नेवर फॉलोड अ वर्कआउट प्लान that was given off of YouTube. I followed the exercises that they would tell me. लेकिन मैं जिम में जाता था. I used to do the workout plans maybe for a month, और उसके बाद I used to do it in my own way, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि my body works, in a way that is more accustomed to getting more results in the way I design my workouts. अब मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत experienced हो गया था, लेकिन बात मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो लोग करते हैं YouTube पे, मैं वापस उसी बात पे आ रहा हूँ, they will bait you. वो आपकी तरफ बेट फेंकते हैं, कह देंगे कि जी अच्छा ये फ्लां वर्कआउट है स्ट्रेंथ के लिए, फ्लां वर्कआउट है यहाँ पे इस मसल के ऊपर ज्यादा फोकस हो रहा है, या फ्लां वर्कआउट है आपको पंप ज्यादा कर देगा, फ्लां वर्कआउट है that will give you more strength or that will help in fat loss.
इट्स ऑल, ये एक मैं आपको बताता हूँ, ये शिकैनरी है एक तरह की, सिर्फ आपसे व्यूज कैच करने के लिए। अगर वो आपको सिर्फ ये बता देंगे ना, यू गो टू द जिम, यू वर्क आउट, आप एक्सरसाइज करें, यूजुअली मोर और लेस फैट लॉस के अंदर भी मैं वही वर्कआउट करता हूँ, उसी वेट के साथ करता हूँ जो मैं बल्किंग में करता हूँ, एंड इट वर्क्स अमेजिंग। ठीक है, मुझे आप देखिए, अगर आपको मेरी फिजिक नहीं पसंद तो आप तब के यार, आई डोंट वांट टू लिसन टू यू बिकॉज यू आर नॉट एट द प्लेस वेयर आई वांट टू बी। ठीक, फिर आप ना सुने। लेकिन जो ये लोग करते हैं ना, उनको सिर्फ एक चीज चाहिए, वो व्यूज। वो अगर 4 5 6 वीडियोस इस तरह की निकालेंगे ना, हालांकि अगर आप वर्कआउट्स को गौर से देखें, किसी के रेप्स थोड़े से ज्यादा हो गए, किसी के अंदर थोड़ी सी एक्सरसाइज डिफरेंट होगी, at the end of the day, I'm telling you this one thing, they only care about cashing those views, उन्हें पैसे चाहिए। The more videos they have, the more confusion they cause among your minds, the more attention they're gonna get on their YouTube videos। कि अच्छा यार, मैंने वो देखा मेरे बाजू के अंदर ना ये मसल के ऊपर डेफिनेशन नहीं आ रही, तो मे बी उनका वो फला दूसरा वर्कआउट प्लान ट्राई करना होगा। इट्स ऑल ट्रैश, डोंट लिसन टू एनी ऑफ दैट स्टफ। इवन माई वर्कआउट वीडियोज, अब आप देखेंगे मैंने इतनी रंग बिरंगी यूट्यूब पे वीडियोज नहीं डाली उसकी रमदान पे, सॉरी रमदान कह रहा हूँ, वर्कआउट्स पे। इफ यू गो ऑन माई यूट्यूब चैनल यूल फाइंड कि बल्किंग, अगर मैंने प्लेलिस्ट बनाई है उसके अंदर सिर्फ 5 वीडियोज हैं। गो चेक दोस वीडियोज आउट। अगर आप ट्राई करते हैं, आप उन्हें ट्राई करें 1 महीना। अगर आप बिल्कुल ये इनएक्सपीरियंस्ड और आप डरते हैं कि मैंने चेंज नहीं लेके आने को वर्कआउट प्लान के अंदर, देन फॉलो देम एज इट इज फॉर 2 मंथ्स। आई कैन गारंटी यू आफ्टर 2 मंथ्स आपको इतना ज्यादा पता चलने शुरू हो जाएगा अपनी बॉडी के बारे में, इवन बीइंग एट द जिम, दैट you'll be able to make your own workout plans. That is how these YouTubers and all these fitness influencers are made on the internet. That's the real truth. उनके पास ना कॉलेज डिग्री है, ना कोई यूनिवर्सिटी डिग्री है, कुछ भी नहीं है। Even me, I never went to university for anything other than mechanical engineering. It has nothing to do with fitness, but I call myself a coach, and that comes from experience, from the experience that I've gained by working so extensively in this, fitness lifestyle. So aap bhi karenge, you will gain experience, and the experience that you have is something that other people will want to have too, to change their lives, to change their standards. उम्मीद है it made sense. So this is the truth. ये एक चीज मैंने आप लोगों को बतानी थी। Don't cheap ना बने, डोंट फॉलो एनीवन। मैंने हमेशा ही अपने फॉलोअर्स को बताया शुरू से लेके अब तक कि डोंट इवन कॉल योरसेल्व्स माय फॉलोअर, डोंट बी अ फॉलोअर। फॉलोअर मेंटालिटी इज अ बैड मेंटालिटी, फैन मेंटालिटी इज अ बैड मेंटालिटी। वहां पे आप अपने आप को ये कह देते हैं कि आई एम एट दिस लेवल एंड द अदर गाय इज एट दैट लेवल, और आप सोचते नहीं, आप उस माइंडसेट से बाहर नहीं आते कि आई कैन compete with this guy. मैंने आइडियलाइज किया कुछ लोगों को, but I've never been, वो होता ना कि some people go head over heels for their idols कि oh यार एक उनका कोई attention मिल जाए, ये मिल जाए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। I learned from their life, I learned from the way they work, and I adopted that in my life to get to the place they are at. I think in terms of fitness, I've done a remarkable job in the last 9 years जब से मैं workout कर रहा हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज थी जो मैंने आप लोगों को समझानी थी। गो आउट, एक्सपेरिमेंट, ट्राई फॉर योरसेल्फ। इसके अंदर ना पढ़ना कि अच्छा ये फ्ला डाइट है, ये वो डाइट है। लेकिन एक चीज मैं आपको जरूर बताऊंगा, इफ यू वांट ट्राई समथिंग, डाइट के ऊपर आप ज्यादा डंडियां ना मारें। डाइट एक अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं ना, इंटरनेट पे किसी की भी करें, जिसकी भी मर्जी करें। मेरी भी डाइट प्लान्स हैं। आई कैन ओनली स्टैंड बिहाइंड द डाइट प्लान्स दैट आई हैव मेड, बाकियों का नहीं मुझे पता। लेकिन डाइट प्लान को आप फॉलो करें कंसिस्टेंटली। वर्कआउट उसको आप मिक्स मैच कर सकते हैं, लेकिन ना अब एक हफ्ते बाद नहीं करना। अनटिल और अनलेस अगर आपको 1 महीना आपने एक्सरसाइज की है, फिर आपको पता चलता है उसके बारे में कि अच्छा अब वर्कआउट मेरे लिए मुझे समझ आ रहा है, ये इस तरह काम करता है, इस तरह मेरी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है इस वर्कआउट के साथ, तब करें। ठीक है, 100% फैक्ट्स। रॉकी वाली यार, ये फैक्ट्स ड्रॉप करने होते हैं, फैक्ट बॉम्ब्स। मेकिंग माई डिनर एंड योर IG बेस्ट कॉम्बो। प्रीतम, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप ये मेरी वीडियो देख रहे हो। इट्स ऑल रियल टॉक। मैंने आप लोगों से कभी कोई चीज़ छुपाई नहीं है। Every time I learn something new and I get even more inspired by your words every single time. Thank you so much. यहाँ पे मुझे मैसेज किया है ऋषभ फिट। हेलो भाई, वीडियो क्यों नहीं डालते वर्कआउट की? यार अभी मैंने इतना लंबा लेक्चर दिया, वर्कआउट की वीडियोस क्यों नहीं डालता। अब ये नहीं है कि मैं उस वजह से नहीं डालता कि ये जो भी मैंने सारी एक्सप्लेन किया, आई हैव बीन अ बिट बिजी। अभी मैं एक अनाउंसमेंट भी अपने इंस्टाग्राम पे करूंगा, जहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि व्हाट आई हैव डन इन द लास्ट 2 years. I've done a lot. I'm an official real estate agent in Ontario now. So वो भी एक चीज़ थी जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ साथ मैंने की कंप्लीट। I've been a fitness coach, मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लिया। लेकिन अब उसका मतलब ये नहीं कि मैंने इंजीनियरिंग की जॉब कोई पकड़नी थी। That was never my goal. I have my own business now. I also have a real estate license, which means that I have so many things on my plate.
तो इसको जगल करना बड़ा मुश्किल हो गया था। यूट्यूब भी है मेरा, वो भी भूल जाता हूँ मैं। तो फिटनेस ट्रेनिंग भी थी, कोचिंग करता था मैं क्लाइंट्स की, तो वो भी एक और चीज़ थी। तो इतनी ज़्यादा चीज़ों पे जब आपके हाथ बैठे हो ना, तो बड़ा मुश्किल होता है हर चीज़ को मैनेज करना। सो भाई मेरे सारे पैसे और जिम इक्विपमेंट पे खर्च हो गए हैं, सो मैं प्लान वगैरह अफोर्ड नहीं कर पाया। सो आई एम फॉलोइंग वर्ड टू वर्ड फ्रॉम योर यूट्यूब प्लान, होप मैं नेक्स्ट मंथ अफोर्ड कर पाया। परमपल, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि आई एम हैप्पी दैट यू आर स्टेइंग कंसिस्टेंट विद द जिम एंड यू आर फॉलोइंग द प्लान्स दैट आई मेड ऑन यूट्यूब। मैं एक सच्ची बात बताता हूँ कि a lot of the people when they text me or when they send me a DM on Instagram asking me if I can make a plan for them, and of course they know that it's not a free service. अगर मैं लोगों के लिए मुफ्त में उनके लिए टेलर्ड प्लान्स बनाना बैठूं, तो मेरे पास खाना खाने के लिए क्या, मेरे पास सांस लेने के लिए टाइम ना हो। सो दे नो दैट इट्स अ पेड सर्विस और वो पैसे देने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन आई नेवर आस्क देम कि अच्छा कि आप मुझे पैसे फट दे दें, क्योंकि लोग यही करते हैं, वो बड़े खास के खुश होकर आपसे पैसे लेने के लिए बैठे होंगे, बड़े बेकरार बैठे होते हैं। मेरा हमेशा पहला मैसेज ये होता है कि हैव यू वॉच्ड माई यूट्यूब वीडियोज ऑन यूट्यूब, ठीक है। तो वो वीडियोस अगर अब आपने देखी हैं, तो उसके अंदर मैं बताता हूँ कि आप पहले कम से कम वो प्लान को आप फॉलो तो करें, आप उसे ट्राई करके देखें। दोज आर द एग्जैक्ट सेम प्लान्स दैट पीपल वो चार्ज यू मनी फॉर, और आप उसे पहले ट्राई करें, अपने पैसे बचाएं, वही जिम मेंबरशिप पे पैसे लगाएं, अच्छे खाने पे लगाएं, सप्लीमेंट्स पे लगाएं, क्या पता आपको वो प्लान्स काम कर जाएं। ये आपके जेन में इन लोगों ने, ये फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स है ना, सो कॉल्ड फिटनेस इन्फ्लुएंसर नहीं मैं कहते हैं ना, मैं कहता हूँ बिजनेसमैन, ये फिटनेस मैनिपुलेटर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स नहीं है। आपके दिमाग के अंदर एक सीड डाल देंगे दैट YouTube के ऊपर जो वर्कआउट और डाइट प्लान्स हैं, दे आर गुड, बट मे बी अ टेलर्ड प्लान इज गोना वर्क द बेस्ट फॉर यू, एंड देयर इज सम रियलिटी टू दैट। इट्स नॉट कि वो बिल्कुल ही एक बकवास होती है, लेकिन मैं आपको एक स्केल पे बताता हूँ, स्केल ऑफ 1 to 10, वो जो मैंने यूट्यूब पे वर्कआउट प्लान्स डाले हुए ना, अगर फॉर एग्जाम्पल नॉन वेज फैट लॉस मैंने प्लान डाला हुआ है, डाइट प्लान, दैट्स गोना वर्क। अगर एक बंदा कहता है ना कि नहीं यार इट्स नॉट टेलर्ड फॉर मी, लेकिन आप मुझे बता दें 1 से लेके 10 तक, 10 बीइंग द बेस्ट स्कोर, how much is it gonna work for me? It's gonna work at maybe an 8.5 or a 9. वो जो एक छोटा सा नंबर होता है ना, कि जहाँ पे आपको अपनी मर्जी का एक आधा मील मिल जाता है, या फिर आपको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है इस मामले के अंदर कि अच्छा मुझे 3 के बजाय 2 मील्स के अंदर अगर सारा कुछ मिल जाए, कोई इस तरह की कोई बात हो, दैट इज व्हाट यू कवर इन वो जो होता है ना कस्टमाइज्ड डाइट प्लान के अंदर। तो डोंट कट कॉर्नर्स सो फास्ट। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि यूर कटिंग कॉर्नर्स, यूर मेकिंग योर वर्क ईजियर, लेकिन ट्राई टू गो थ्रू द प्रोसेस फर्स्ट इन द बिगिनिंग, आपको अंदाजा हो जाएगा कि एवरीथिंग वर्क्स एंड एवरीथिंग वर्क्स अमेजिंग, यू डोंट नीड टू स्पेंड मनी ऑन एनीथिंग एट ऑल। लेकिन इफ यू स्टिल नीड माई हेल्प, आई एम अवेलेबल। 5% बॉडी फैट, 5% बॉडी फैट, मैं आप लोगों को अपने बॉडी फैट दिखाता हूँ, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, एक सेकेंड। ये लें जी। So I don't know what my body fat percentage is at the moment, but I can say that it's pretty close to 10%. I think it's 11%. लोग कहते हैं कि यार मेरा body fat 12% पे आ गया, और उनको सिर्फ ऊपर वाले 2 एब्स नजर आ रहे होते हैं, ना यहाँ कुछ नजर आता है, ना इधर कुछ नजर आता है, ना लोअर एब्स पे कुछ नजर आता है। So that's not even 12%. और अगर आप कह रहे हैं ना कि no Sama, your body fat looks very close to 8%, I don't think that it's 8% for one reason, क्योंकि मेरा muscle mass ज़्यादा है. So the more muscle mass you have, the more lean and the more defined you're going to look at, even at higher body fat percentages. So यहाँ पे जो fat है ना, I think the last bit of fat that I have on my body, कुछ लोग हंसेंगे कहेंगे क्या fat बकवास लगाई, ये fat तो नजर आ ही नहीं रहा. It's around this part, if you can see. It's मेरे ख्याल से मेरी body में पूरा 2 किलो fat रह गया. उसके बाद I will be very close to 9% body fat, लेकिन I'm not doing this for any competition. वैसे ही मेरा दिल चाह रहा था body fat कम करने को, and I've done that, क्योंकि इसके अलावा मैं कुछ कर नहीं सकता. I don't have a gym, I can't do bulking, so this is what it is. So we need to do cardio while bulking. You don't need to do cardio at all. Don't do cardio while bulking. Thanks for answering my question. No problem. अच्छा, मैं आप लोगों के क्वेश्चन जल्दी जल्दी पकड़ रहा हूँ, अगर किसी का मिस हो गया आई अपोलोजाइज फॉर दैट, लेकिन आई एम आंसरिंग योर क्वेश्चन. जो पहले मैंने लेक्चर देना था वो मैंने दे दिया. डाइट प्लान की वीडियोस कब तक डालोगे? डाइट प्लान की वीडियोस हैं, अगर आपने और देखनी है तो मे बी आई कैन मेक अ फ्यू मोर वीडियोस स्टार्टिंग सून, लेकिन जस्ट गिव मी सम टाइम.
but make sure that you follow the previous diet plans that I've uploaded on YouTube. मेरे एक दोस्त हैं वो जो वेट लॉस के लिए कीटो इंटरमिटेंट जैसी डाइट कर रहे हैं पर वेट कम होकर वापस बढ़ रहा है. इवन शी इज कंसिस्टेंट. वेट वापस बढ़ रहा है सेम खाना खा के उसके अंदर, या फिर वो ये करिए कि वो शी यूज्ड टू बी मोर एक्टिव ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे, मे बी शी वाज डूइंग सम कार्डियो और अब उनका कार्डियो कम हो गया, डाइट सेम है, तो वो कैलोरी डेफिसिट है वो मेंटेन नहीं हो रहा, वो जरा ऊपर उसमें चले गया. या मे बी देयर कुड बी सम रीजन कि यू आर बीइंग अ बिट टू क्विक टू जज कि अच्छा 1-2 दिन ही हुए हैं या 3 दिन हुए हैं, वेट वो वगैरह सारा कुछ, आई मीन वेट ऊपर जा रहा है लेकिन डाइट वगैरह तो सारी सेम थी. उसके अंदर ये हो सकता है कि वेन एवर यूर गोइंग थ्रू अ स्ट्रेसफुल फेज और वेन एवर यूर स्ट्रेस्ड, so your cortisol level, it shoots up a little bit. So say for example if I'm going through my exams, which I am, kuch din aise honge I'm following my diet but the next day I'm going to wake up with a little bit more weight than what I was expecting it to be at. So for example raat ko hamesha वजन कम होना होता है. For example अगर मैं सो रहा हूँ ना 83 kilograms रात को सोने से पहले मैंने अपना weight measure किया और अगले दिन उठूंगा I'm expecting it to be around 82 kilograms fasted, लेकिन वो 82 नहीं होता, वो 83 होता है. ऐसा कभी नहीं होता कि you go to bed 83 kilograms के साथ और सुबह उठेंगे 84 होता है. It doesn't happen. I mean, you need to have a basic grip on the fundamentals of physics that you cannot create mass until or unless you're seeking energy and you're converting that energy into a mass form in your body and you're some kind of a freaking mutant or something. वो तब आप गेन कर सकते हैं. इस तरह नहीं होता. हमेशा ये होता है कि मेरा वेट अगर 83 है और अगले दिन भी 83 होगा, I would say कि water retention hai, even though my diet was clean, even though I was losing weight at the same diet that I followed the last day, तो उसके अंदर सिर्फ ये फैक्टर्स आते हैं. सो मे बी उनका डेफिसिट शायद कार्डियो की वजह से ज़रा ऊपर था और कार्डियो अगर उन्होंने करना बंद कर दिया तो वो डाइट के साथ वेट ऊपर जाना शुरू हो जाएगा. डैम प्योर एस्थेटिक्स. यस सर, ये एस्थेटिक्स मैं बता रहा हूँ आपको कि इट changes your life. So once when you're lean, once when you're in shape, once when you're aesthetic, you walk with confidence, and it's not the kind of the confidence that you need to bring to the table with people around you jahan pe you're trying to use this confidence to bring someone down. Don't do this. Logo ko नीचा दिखाने के लिए नहीं कभी करना, but just to feel good about yourself, क्योंकि obviously बात है, दो चीजें जिंदगी में, either you want to be I mean not either, but you want to be successful financially, आपको पैसे चाहिए, that's one goal, and you want to be fit health wise, जहाँ पे आपके पास एक अच्छी फिजिक और डैड बॉड ना हो, ऐसा करके गट ना निकला आपका. तो बात मैं आपको सिर्फ यहाँ पे ये समझा रहा हूँ कि मे बी if you do both in your life, then I think you're a complete person. At the end of the day, ये दो चीजें एक चीज की तरफ लीड करती हैं, that is internal happiness. If you're not happy, even though you have both of them, then you have failed in your life. You need to find happiness. It's hard to find happiness without the two. I'm going to be honest, considering the world that we live in. We need money, we need health. अगर दोनों में से कोई एक चीज कम हो, it's hard to be happy. तो एक चीज मैंने अचीव कर ली अपनी जिंदगी में, that was good health. I don't want to get any bigger than this. वो फिर unnatural route के through जाना पड़ेगा. I don't want to do any of that stuff. I love the way I look. I love the way I feel, even though I'm not super duper big. But it's perfect. I think I've achieved the pinnacle of natural fitness. That's what I believe in. So now I'm going to focus more on the other aspects of life. Weight gain करना है fast, कैसे होगा? Follow my lean bulking diet plan. और अगर lean bulking diet plan अगर आपके लिए लगता है कि कैलोरीज थोड़ी सी कम है, हालांकि वो भी बहुत ज्यादा है, मैंने एक दूसरा bulking diet plan भी बनाया है. Go check it out. It's been 8 weeks. पहले 3-4 weeks amazing results, but next 4 weeks were average. Going for another 4 to 6 weeks. Hope my body fat will fall near 18% and will be ready for the bulking then. Definitely. जब आपको लगे ना कि your progress is kind of stagnating or it's stuck at one point, it's more or less because of some other factors that you're not able to identify at that point. So my best recommendation is to stick to your plan. No matter how much stuck you feel in your progress, just keep at your program. Do not make any changes, and believe me, everything will fall into its place at the right time. मेरे साथ भी कितनी दफा ऐसा होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है यार ये वेट नीचे जा नहीं रहा, सब कुछ सही हो रहा है, क्या हो रहा है, फिर बाद में मैं समझ लगती है कि अच्छा ये इसकी वजह से होता है. And I'm happy at the end of the day कि I didn't make any changes to my diet plan. But make a video on how to deload in Ramadan. I can, very specific. आपने टॉपिक डिमांड किया, लेकिन डेफिनेटली आई कैन. अस्सलाम वालेकुम भाई. वालेकुम अस्सलाम असद भाईजान, कैसे आप? हाउ मच इंसुलिन यू यूज डेली?
I'm assuming that you're a type 1 diabetic. Insulin तो carb to the insulin ratio मुझे follow करनी पड़ती है as a diabetic. So it's for every 10 grams of carbohydrates, I take 1 gram of insulin. That is Humalog. तो हर diabetic की अपनी एक insulin ratio होती है, ये मेरी ratio है. Which workout split should be done for natural bodybuilding? नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के लिए ये नहीं है कि बाकी बॉडी बिल्डिंग जो आप वर्कआउट प्लान्स देखेंगे वो अननेचुरल लोगों के लिए हैं. एक और चीज बड़े मजे की है, जस्ट स्टे विद मी, अभी बड़ा जरा स्पाइसी टॉपिक होने लगा मजे का. सो अगर इससे आगे वाले जो क्वेश्चंस है वो जरा रोक ले भी, तब टाइप करना जब मैं आपको कहूंगा वो, अदरवाइज इट्स गोना गेट लॉस्ट और फिर आप लोग ऐसे छुड़ते रहेंगे कि ओ आई पोस्टेड अ क्वेश्चन 20 टाइम्स आपने आंसर नहीं किया. हमने बड़ा सुना है पास्ट के अंदर, वी हैव सीन दिस अ लॉट, दिस ट्रेंड ऑन सोशल मीडिया. आई मीन पहले लोग ये कहते थे कि जो गोल्डन एरा था ना बॉडी बिल्डिंग का, जब आर्नल्ड थे, फ्रैंक ज़ेन और ये सारे सर्जियो ओलिविया और ये सारे बॉडी बिल्डर्स थे ना, पीपल यूज्ड टू लुक एट देम और वो एक ही चीज अपनी जुबान से निकाल के कहते थे, ओ स्टेरॉइड्स और ओ दे इंजेक्ट देमसेल्व्स विद ड्रग्स और ये इसी की बदौलत उन्हें ये फिजिक मिली है. एंड they never used to identify the hard work that used to go into that, which I know it's really hard to get to the place where they were, and they were legends in their own world. लेकिन मैं अब आपको बताऊं, अब लोग ये वाली कंप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पे कितने ज़्यादा फोरम्स पे देखा कि अगर फॉर एग्जांपल कोई इंटरनेट सेलिब्रिटी एंड दे हैव पोस्टेड देयर ट्रांसफॉर्मेशन, एंड ऑफ कोर्स वी नो दैट कि वो स्टेरॉइड्स वगैरह लेते हैं या उन्होंने खुद डिस्क्लोज किया हुआ है या उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया, इट्स जस्ट दैट ऑब्वियस फॉर अस टू नो कि अच्छा दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट नेचुरल. वहाँ पे कोई बंदा जाके कह देना, वो हमेशा अपनी कैप्शन में ये लिखेंगे, और 10 years of hard work, 20 years of hard work. They're gonna give credits to taking no days off, being very disciplined with the diet. लेकिन वो एक चीज मिस कर जाते हैं अपने कैप्शन में से, वो ये नहीं बताते कि उसके अंदर ड्रग्स का कितना बड़ा रोल था. तो कितना बड़ा रोल था या छोटा रोल था उसके बारे में बाद में बताता हूँ. लेकिन अब इसी को नोट करते हुए कोई वहां पे बंदा नीचे कमेंट्स में चला जाए ना और वो ये कह दे कि यार ये तो बड़ी बकवास मारी है इसके अंदर, अपनी स्टेरॉइड्स के ऊपर तो कोई क्रेडिट दिया नहीं, हालांकि स्टेरॉइड्स का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर. तो वहां पे कुछ 15-20 लोग उसके कमेंट के अंदर एक थ्रेड शुरू कर देंगे, उसे गालियां निकालना शुरू कर देंगे कि ओ तुम्हें कुछ पता है नहीं, देयर इज ऑलवेज हार्ड वर्क दैट यू हैव टू डू, स्टेरॉइड सिर्फ थोड़ी सी मदद करते हैं और हार्ड वर्क बहुत ज्यादा करना पड़ता है इन्हें. यहाँ पे मैं अब आपको अपने एक्सपीरियंस एज अ नेचुरल एथलीट मैं आपको बताता हूँ, एंड इट्स नॉट गोना गेट एनी मोर truer than this, the way I'm pitching it to you. So मेरे मुंह से ये जो बात निकली एज ए नेचुरल एथलीट, मैं अब आपको बताता हूँ जो स्टेरॉइड्स का क्या इन्फ्लुएंस है, वो कितनी तरीके से आपकी ये जो बॉडी बनाने में हेल्प करते हैं. क्योंकि मैंने अपने I have witnessed this thing first hand in front of my eyes, जहाँ पे मैंने अपने फ्रेंड्स को लेते हुए देखा है. And I saw an incredible increase in their performance at the gym, not just in terms of muscle mass, but in terms of strength. And I saw them struggling for years before, and they did the impossible in just a matter of weeks. तो बात सिर्फ यहाँ पे ये है स्टेरॉइड्स के बारे में, वो ये है कि I'm doing some work, ठीक है. अब आपको पता है कि मेरा दिल चाहता था कि मैं बड़ा हूं, लेकिन अब मुझे एक ट्रेड ऑफ नजर आ गया कि if I want to get any bigger, there are going to be more injuries, there's going to be more risk, and there's going to be इतना सा progress मिलेगा इतना ज्यादा काम करके, ठीक है. अब मैं मेहनत बहुत करता हूँ even to maintain the physique that I have. I work really really hard. But say for example, if I do the same amount of hard work जो मैं अभी कर रहा हूँ, I'm being very honest, I'm not praising myself, लेकिन I have to say this to you ताकि आप लोगों को अंदाजा हो, लोग आपसे छुपाते हैं बातें, कि अगर यही मेरा वर्क एथिक रहे, यही मैं अपनी जो कंसिस्टेंसी डाइट के अंदर दिखाता हूँ, वर्कआउट के अंदर दिखाता हूँ, इसको मैं कॉम्प्लीमेंट कर लूँ ना स्टेरॉइड्स के साथ, मैं स्टेरॉइड्स लेना शुरू कर दूँ साथ, I swear to God, I'm not lying. I have good genetics too. अब ये मैं आपको बताऊंगा ये मैंने क्यों कहा है कि I can easily make it, in one of the top names in the classic physique. अब मैं किसी को belittle नहीं कर रहा. I know क्योंकि I'm confident because of the hard work that I've done. I know कि मेरे अंदर क्या potential है. तो ये मुझे आराम से पता है कि ये जो मैं hard work करता हूँ, जितनी dedication मैंने डाइट के अंदर दिखाई है, डायबिटिक होते हुए, I can easily make it among the top names of classic physique, क्योंकि classic physique मुझे पसंद है. लेकिन I'll never get there क्योंकि steroids I'm never gonna take them. तो यहाँ पे सिर्फ ये बात बता रहा हूँ कि steroids make a huge difference. अब आप ये कहते हैं ना कि जो बंदा steroids लेता है वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता है. नहीं, मैं आपको बताऊं कितने ज्यादा लोग ऐसे होंगे जो हार्ड वर्क करते हैं, बड़े डेडिकेटेड हैं,
लेकिन they would be way bigger than me, way leaner than me, and they work still less than me to look like the way they do. और मुझे इतना ज़्यादा काम करने के बाद I look like half their size. And it's the truth. Steroids give you they don't give you a level play field to play on. उनके जो field है जिस पे वो मेरे साथ game खेल रहे हैं, they are at a much bigger advantage. So that's the truth. तो ये वाली बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि ये जो चीज है ना स्टेरॉइड्स को जहां पे डाउन प्ले किया जाता है। पहले लोग ये करते थे, पहले मुझे भी गुस्सा करता था कि लोग समझते नहीं है कि यार एक टीका लगाया वो समझते हैं कि पता नहीं आर्नल्ड बन जाना है। ये पहले वाला कॉन्सेप्ट था। जो आज का बड़ा मिलेनियल कॉन्सेप्ट आज का चलता है वो ये है, लोग ये समझते हैं कि पता नहीं स्टेरॉइड्स का इतना ज्यादा इफेक्ट या इन्फ्लुएंस नहीं है, और जो हार्डवर्क है बहुत ज्यादा हार्डवर्क करते हैं, इंस्टाग्राम पे जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स बने फिरते हैं, it's very easy to have a good physique with steroids, trust me. Until or unless अगर आप सीबम की बात करते हैं ना, सीबम is, you know, वो इसका मैंने वैसे नाम लिया, I look up to that guy and he does a lot of hard work, he has great genetics. So until or unless you look like that guy or you're among the top 5 classic physique competitors in the world, तब आप अपना पूरा उसको compliment करें कि अच्छा I work really hard and I do take steroids and they help, but I do work very very hard, maybe more than anybody else, तब आप claim कर सकते हैं. उसके अलावा if you're like an average classic physique or a men's physique guy, then no, तब आप ये claim नहीं कर सकते कि अच्छा steroids मैं लेता हूँ लेकिन मैं hard work बहुत करता हूँ, क्योंकि because you look like shit. That's just the truth. How much calories are you taking now and what are your macros? तो मेरे macros कुछ इस तरह के हैं कि पूरे दिन के अंदर I'm taking about 140 grams of protein. It's pretty low क्योंकि मेरा वर्कआउट का जो वॉल्यूम है वो इतना ज़्यादा नहीं है. इट्स मोर फैट लॉस के लिए जो मैंने वर्कआउट डिज़ाइन किया था उसके अंदर वॉल्यूम बेस्ड वर्कआउट कम है और कार्डियो बेस्ड ज़्यादा है. जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं देयर समवेयर अराउंड 130 to 150 और फैट्स काफ़ी मिनिमल हैं, देयर अराउंड 30 grams प्रॉब्ली मैक्स, इससे ज़्यादा नहीं है. तो ये मेरे मैक्रोज हैं. मैंने वर्कआउट प्लान पहले शेयर किया था शुरू में अपने इंस्टाग्राम की किसी पोस्ट में, लेकिन उसके बाद आई वाज़न्ट एबल टू ट्रैक इट. Thank you for answering. So, any suggestion can you give for her for weight loss? And do you mean increasing weight during weight loss can be because of more sleep and anything more? No. जो increase होता है ना आपका weight, it's because of increased stress. अगर वो किसी चीज़ की टेंशन ले रही हैं, उनकी फिजिक है, उनकी रूटीन के अंदर कोई डिस्ट्रप्शन आई है, अगर if she's married और उनके बच्चे वगैरह हैं या हस्बैंड हैं जिसकी वजह से उनकी घर के अंदर उनके ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा है, टेंशन आ जाती है, it can contribute to some kind of an increased stress which can result in increased water weight retention. But that water weight retention अगर हो भी जाती है ना, उसका मतलब ये नहीं उन्होंने फैट गेन कर लिया और बंदा अपना सर पकड़ के बैठ जाए. That water can flush out in the future, so don't worry about that. आपका वेट कितना है? मेरा वेट 82 किलोग्राम्स है. हाइट 6 फीट है, वेट 82 किलोग्राम्स है. ब्रदर प्लीज रेकमेंड पुश पुल लेग्स और ब्रो स्प्लिट फॉर मसल बिल्डिंग. आप मेरा यूट्यूब पे जाके देखिए, आई हैव मेड बल्किंग प्लेलिस्ट, उसके अंदर 5 वीडियोस हैं और उसके अंदर पुश पुल लेग रूटीन नहीं है, ब्रो स्प्लिट है, बट इट्स अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम दैट. हाउ आर यू उसामा भाईजान? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? दीपक गुप्ता ने मुझसे पूछा है. मकवान नील भी हैं आप भाईजान, कैसे हैं? मैंने आपका आज सुबह डीएम देखा था लेकिन मैं रिप्लाई नहीं कर सका, तो मैंने आपके बारे में ही सोचा कि आज एक लाइव चैट कर लेते हैं. भाई वर्कआउट अगर मॉर्निंग, अच्छा भाई सजेशंस प्लीज, अच्छा सजेशंस पूछें. भाई वर्कआउट अगर मॉर्निंग में करूं फास्टिंग में तो ज़्यादा रिजल्ट्स आएंगे सिंपली आफ्टर ड्रिंकिंग कॉफ़ी. राइट नाउ आई एम डूइंग आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड कॉफ़ी. तो मैंने इसके बारे में परमपल रंधावा, अगर आपने मेरी आखिरी द लास्ट पोस्ट दैट आई हैव मेड ऑन माय इंस्टाग्राम, ये जो बिल्कुल आखिरी मेरी पोस्ट है जहाँ पे मैंने ऐसे करके अपना ब्रेकफास्ट पकड़ा था, इफ़ यू गो ओवर देयर और अगर आप उसका कैप्शन रीड करें, आपके आंसर एग्जैक्ट क्वेश्चन का आंसर मैंने उधर दिया हुआ है. सो गो रीड दैट कैप्शन व्हेनेवर यू हैव टाइम. Bro, tell me something about man boobs. I seriously want to know about it. How to get rid of it. जो man boobs होते हैं ना वो accumulate करते हैं आपकी बॉडी के ऊपर because of the excess fat. ठीक है? If you want to get rid of your man boobs, the only way to do that is either दो रास्ते हैं, you start building more muscle around your chest, लेकिन it's not gonna get rid of the fat. लेकिन वो ये होता है कि जब आपकी छाती थोड़ी सी बड़ी होती है, fill होती है नीचे से, तो वो शेप में आ जाती है, लेकिन वो फैट फिर भी ऊपर थोड़ा सा रहता है, लेकिन थोड़ी सी डिफाइन होती है. The faster way to get rid of man boobs is to go on a fat loss diet. There's no other way. अब आप कहते हैं ना कि मैं चेस्ट की एक्सरसाइज करना शुरू कर दूं और पूरा दिन पिज्जा बर्गर वगैरह खाऊं, that's not gonna work. Brother, what's your height? 6 feet.
Most of the gym guys say they take 300 to 400 grams of protein. Is that true? That's a load of bullshit. It's not true, Gilbaru. Sorry, excuse my language. 300 to 400 grams of protein सिर्फ जे कटलर वो भी लेता होगा सिर्फ तब जब उसने अन्य वर्किंग करनी होगी या बंदों का दिमाग खराब हो गया. मुझे देखें, मेरा जो बॉडी वेट 82 किलोग्राम्स, आई एम 6 फीट, और अब इसके अंदर जो प्रोटीन मैंने लेना है फॉर फैट लॉस, आई एम टेकिंग 140. नॉट टू मेंशन कि मैं जिम नहीं जा रहा, जिम जाता हूँ तो 180 लूंगा या 90 लूंगा, लेकिन द मोस्ट दैट आई हैव गॉन, आई थिंक इट्स 220. आई हैवंट गॉन अबव दिस. और अगर मुझे 220 से मेरा गुजारा हो सकता है, तो अगर किसी की फिजिक मेरे से छोटी, उससे तो सोचना ही नहीं चाहिए ऊपर. यही तो मैं बता रहा हूँ, इन्होंने दिमाग खराब किया हुआ आप लोगों का, जितने भी फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स बने फिरते सारे. मोस्ट ऑफ द जिम गाइज. ओके, सो स्टार्टिंग के एक ईयर में कितना वेट गेन किया था? स्टार्टिंग के एक साल में मैंने बड़ा ज़्यादा वेट गेन किया था, क्योंकि ऑनेस्टली मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, अगर आपने मेरी ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो देखी है उसके अंदर मैंने बताया था आई डिडंट डू एनीथिंग फॉर फर्स्ट ईयर व्हेन आई केम टू कनाडा. सो आई केम टू कनाडा इन 2014. उसके अंदर आई वांटेड टू गो टू यूनिवर्सिटी, आई अप्लाई टू UofT. उसके अंदर किसी और प्रोग्राम से एडमिशन आ गया था, और एक और मसला था कि मेरा स्टडी परमिट अभी प्रोसेस नहीं होता प्रॉपरली. आई वाज गोइंग थ्रू माई इमिग्रेशन प्रोसेस. तो एंड पे हुआ ये था कि आई टुक अ गैप ईयर इन द बिगिनिंग, और मैंने कुछ भी नहीं किया ना. आई डिडंट डू एनी वर्क. तो आई डिडंट डू एनी स्टडीज फॉर माई एजुकेशन. कुछ भी नहीं किया मैंने, और मैं सिर्फ जिम जाता था और वापस आया था और खाता था बस. एंड इन दैट 1 year पीरियड आई गेन्ड, आई थिंक 30 पाउंड गेन किया था मैंने. तकरीबन 30 पाउंड 15 किलो के करीब होता है, और 15 किलो वॉज नॉट प्योर मसल. उसके अंदर 15 के अंदर 10 किलो शायद मसल हो जाएगा, और 5 किलो फैट, या कोई आधा आधा 50-50 कर लें. बट आई थिंक आई मेड द बेस्ट रिजल्ट्स इन द फर्स्ट 1 year. Osama, should I go for abs? It's been 4 months since I started working out, and my weight is also increased 8 kilograms. And if yes, will it affect my body which I built? आप abs कर सकते हैं, आपको किसी ने नहीं कहा कि आप abs ना करें. The only thing is that if you're working to show your abs while you're bulking, that's not gonna work. So the only way to make your abs show and reveal is to lower your body fat. But अगर आपने abs को वैसे thick करना है, जो अच्छी बात है, उनको थिक करें, उनको ब्रिक्स की तरह निकालें वर्कआउट करके, बल्किंग के ऊपर भी वो आप कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं. ओके, सो आई एम गोना टेक वन मोर क्वेश्चन देन आई हैव टू गो. अब मेरे खाने का वक्त हो गया. सुबह फास्टेड, मैंने वर्कआउट किया भी सुबह, एंड नाउ इट्स टाइम फॉर माय ब्रेकफास्ट. वन मोर क्वेश्चन. एक सवाल पूछ ले मुझसे. Thanks, buddy, for your help. No problem. भाई मैंने मेरा आंसर मिस कर दिया. Can you please tell suggestions for her weight loss, like diet, keto, intermittent fasting, anything? डाइट प्लान की वजह से मैंने आपको बताया, अगर उनका वेट नीचे जा रहा था, इट्स नॉट द डाइट प्लान. मे बी इसके अंदर ये हो सकता है कि मे बी उनका जो डेफिसिट था इट वाज नॉट दैट बिग. ये हो सकता है कि उनका डेफिसिट अगर इतना बड़ा नहीं था ना, तो उस डेफिसिट ने उन्हें उधर तक पहुंचाना था जहां तक उन्होंने जाना था. क्योंकि आपको यूजुअली यू हैव टू मेक चेंजेस आफ्टर एवरी 1 month एट मोस्ट. रिकमेंडेड ये कि बाई वीकली आप अपने वेट को ट्रैक करें और देखें आपको डाइट के अंदर थोड़े से कार्ब्स कम करने पड़ेंगे या नहीं. अब मुझे नहीं पता उनके मैक्रोज वगैरह का, मुझे नहीं पता वो क्या उनकी रूटीन है या लाइफस्टाइल क्या, लेकिन द वे आई ट्रेन माई क्लाइंट्स इसकी मैं उन्हें जब फैट लॉस प्रोग्राम पे चढ़ाता हूँ, द फर्स्ट 1 month देयर आर मिनिमल चेंजेस इन द मैक्रोज, बट आफ्टर दैट there are bi-weekly changes that where I am making reduction in terms of the carbs in their food, carbs and fats. आहिस्ता आहिस्ता उसे मैनिपुलेट करना पड़ता है. So that's one thing. Did you get a haircut? Nah bro, I didn't get a haircut. ये देखें, आप लोगों को बाल भी दिखाते हैं यार, ये बाल दिखाता हूँ आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि बाद में जब कट जाएंगे फिर उसके बाद क्या करना है. So my hair, I'm gonna miss them after I get a haircut, which is gonna be soon. लेकिन ये देख लें यार किस तरह के मेरे बाल. So these are my hair. और मेरे बाल, में एक मजे की बात बताऊँ, मैंने अपनी बॉडी पे बड़ा मान किया कि यार अच्छे जेनेटिक्स मिल गए, अल्लाह का शुक्र है और ये सब कुछ, लेकिन कभी बालों के ऊपर मैंने फोकस नहीं किया था इससे पहले, जब तक मैंने इन्हें लंबा नहीं किया. और मेरे बाल भी बहुत अच्छे हैं, आई मीन देयर हेल्थियर, और इनकी मैं केयर ज़रा भी नहीं करता. ये देखिए मेरे बाल किस तरह के. भैया आपका भाई मास्टरपीस एक तरह का पैदा हुआ था.
I'm just joking. बहुत ज़्यादा मैंने कर दी अपनी तारीफें. जिम फिर बांधा हो जी, जिम इतने भी बांधा हूँ, नसी की करिए. जिम के बगैर ये. थैंक यू सो मच, मे अल्लाह ब्लेस यू. थैंक यू मोहम्मद अमन, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आई वाज एबल टू हेल्प यू गाइस आउट. What exercise should be done to keep shoulder and lower back strong? Standing overhead press or military press. भाई एक होम वर्कआउट सीरीज भी बनाई है मैंने. होम वर्कआउट आपने देखी नहीं है, यूट्यूब पे जाके देखें, लिंक बायो में है, लेकिन वो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो की है. आप जाएंगे तो आपको जाके पता चलेगा, where you'll see कि मैंने एक होम वर्कआउट की पूरी फैट लॉस सीरीज बनाई है. जॉन स्नो, या वो कोई कहता है जॉन स्नो, कोई कहता है टार्जन, कोई कहता है एक्वामैन. सारी नाम मुझे पसंद है, कॉम्प्लीमेंट्स ही हैं सारे. तो थैंक्स. Nice one, sir. Your hairs are so good. Thank you. Thank you. Do you face any injury? Yeah, I do. I do a lot of मेरे से बड़ी ज़्यादा मेरे यहाँ पे एक्सपीरियंसेस रहे हैं कि जहाँ पे मेरी रिस्ट के ऊपर भी इंजरी थी, यहाँ पे भी एक टेंडन के ऊपर इन्फ्लेमेशन आ गई थी. रिसेंटली अभी सिर्फ 3-4 हफ्ते पहले मैं हॉस्पिटल भी गया था इसके लिए. आप लोगों को मैं बताता नहीं हूँ. यहाँ पे इधर ना शोल्डर के ऊपर मेरा एक टेंडन स्नैप करने की आवाज़ आई थी, लेकिन दैट वाज जस्ट अ माइनर टियर ऑन माय रोटेटर कफ टेंडन, और वो भी उसको मैंने रिकवरी के लिए 3 हफ्ते दिए थे. सो आई गो थ्रू अ लॉट ऑफ इंजरीज. वही तो मैं आपको बताया अभी इस लाइव चैट की शुरू में. आप मेरी दरमियान में लाइव चैट देखेंगे ना, वहाँ पे मैंने बताया था कि इसके ऊपर अब इस फिजिक को थोड़ा सा आगे पुश करने के लिए ना इतनी मेहनत करनी पड़ती है. इतनी नजर आ रहा है आपको स्क्रीन में, और उसके अंदर जो रिस्क होता है वो इतना होता है, क्योंकि मैं स्टेरॉइड्स, मैंने आपको वही बताया ना, इसके ऊपर स्टेरॉइड्स का भी टॉपिक मैंने शुरू किया था. तो ये प्रॉब्लम है कि इट्स नॉट वर्थ इट टू गेट एनी बिगर. और वहां पे ट्रेड ऑफ ये आता है कि you're losing on your flexibility, you're losing on your agility and your mobility, so you really don't want to trade those off for a little bit of mass. ठीक है, it's not sustainable. Please post all your live insta live chats on YouTube without editing. आप चाहते हैं मैं इस तरह पोस्ट कर दूं? मेरा दिल ये चाहता था कि ये जो क्वेश्चंस नीचे से गायब हो जाते हैं ना, ये ना गायब हुआ करें, तो मैं लगा भी दूं. बट दे काइंड ऑफ डिसअपीयर आफ्टर आई रीपोस्ट देम ऑन माय इंस्टाग्राम. लेकिन करेंगे, कुछ करेंगे. Every time you get injury, do you seek help from professionals? No, I don't. पैसे ना अपने खर्च करें इतने ज़्यादा. अगर छोटी सी कोई इंजरी है, उसको 1 हफ्ता दें, 2 हफ्ता दें, it'll get better. लेकिन अगर कोई बड़ी इंजरी है ना, जो आपके 2 हफ्ते कंप्लीट रेस्ट के बाद भी वो ठीक नहीं हो रही, then you have to seek some professional help from a doctor or from an exercise physiologist. I went to the hospital क्योंकि यार कनाडा में तो चलो फ्री हेल्थ केयर, आप हॉस्पिटल जाएं, एक्सरे करवाएं, सारा कुछ करवाया था. और ऊपर से मैं डायबिटिक भी हूँ, सो आई वांटेड टू बी केयरफुल कि यार ये काम ना खराब हो जाए. एनीवेज गाइस, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप मेरे लाइव चैट में आए. नेक्स्ट टाइम I'm gonna do a live chat. I'm gonna try to make it more interesting. Just keep tuning in and hold your questions for me next time when you guys come on my live. अगर आप लोगों को लगा कि आपका कोई क्वेश्चन मैंने आंसर नहीं किया या कोई मिस हो गया, स्किप हो गया, there are always questions that I've answered in my 1-minute video series on YouTube. आप जाके देखें, एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई है जिसके अंदर 30-40 वीडियोस हैं. And in those videos, I have answered the questions that people send me on my Instagram. बड़े common questions हैं और उनका 1 मिनट के अंदर मैंने आंसर किया है YouTube के ऊपर. So don't forget to check that playlist out. And I hope you guys have a happy Ramadan. And बस आप मुझे दुआओं में अपनी याद रखना, ठीक है? Thank you so much. आपका बाइसेप कितने इंच? ऋषभ फिट पूछ रहे हैं. अभी मैंने आज सुबह मेजर किया है. It was 18.25. 18.25. Alright guys, take care. Allah Hafiz.